Okay, perfect. So let's see this. I'm going to draw a right angle triangle, and this right angle triangle also has a right angle within it. So this is a right angle triangle, you can see. Let's call it A, B, C. And then there is a small square which is inside the right angle triangle. Let's give it a name called D, E, F. Okay. All right. This angle is also 90 because it is given to you, and because this DEBF is a square. So DEBF is a square. If I tell you that the length of AB is 6 from here to here, and the length of BC is 8, can you tell me what is the length of a side of a square? So let's say find the length of a side of of square. Square is DBFEF, DEBF. So I hope it is legible what I've written. Somewhat, yes, sir. मतलब Yeah, you थोड़ा understood the question, confused. right? Yes, yes, I understood the question. We have to find out the length, mean D और EF में से कोई भी एक लेंथ आ जाए स्क्वायर Yes, का. ठीक है. yes. Sir, is it 4.8? 4.8. I think would 4.8. If I give you options, one is this option, other option is 24 by 7, I got and 24 by 5. मतलब 24 by 5. Yeah. So I'll let's. share my approach because still I'm struggling with the similarity, Hmm. but I'm trying to मतलब Hmm. अंडरस्टैंड द अप्रोच. सो हम अगर हमें ई एफ डी एफ सॉरी ई एफ और डी में से कोई एक साइड निकालनी है तो फर्स्टली Hmm. कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी Hmm. एंड जैसे कि अगर इफ वी आर कंसिडरिंग द साइड बी सी विच इज Hmm. 8 एंड उसका जो एंगल है 90 एंड उसके सामने वाला साइड इज ए सी. Did you try first writing angles and then the sides, corresponding sides? That will be better, no? जी सर. So suppose this angle is theta. हम्म. विच I एंगल. mean, you also would have done this way only, just giving it some name, okay? So this is theta, suppose. Then this can be something, let's call some name K. हाँ. And what is this angle then? This angle will be 90 minus theta, Which is same as? which is same as the corresponding angle of it, which is k. Yes. Hmm. So which two triangles did you take for proving for similarity, first of all? A, D, E, and then we take the A, B, C. Firstly, we'll take A, D, Good. E,
and then This we'll is right. Yeah. ABC, and then So let's do one thing. hmm, Uh, let me write. Let me write. इसका side I'm writing here and it's like this. So hmm, opposite 90 is 8. hmm. What is the no, no, it's not 8. Opposite 90 is Opposite 90 is सर वन क्वेश्चन आई हैव वन क्वेश्चन लेट्स से इसके अंदर हमें 90 के सामने वाला साइड व्हिच इज ए ई I mean, hmm, that if we are considering ADE triangle in which D is hmm, angle तो D के opposite side is AE. तो क्या हम जब yes, राइट एंगल वाले क्वेश्चंस करते हैं जैसे हमें AC पूरा 10 दिया हुआ है तो हम AE को 5 नहीं मान hmm. सकते ना. नहीं मान सकते because you do not know if A is the midpoint. जी. Yeah, so नहीं मान सकते. सर व्हाट आई हैव यूज्ड इज कि मैंने कैसे समझा मैंने बी एंगल को लिया. बी एंगल Hmm, का सामने वाला साइड AC जो कि हमारे पास ऑलरेडी 10 आएगा if we use hmm, the Pythagoras. hmm, एंड देन उसके बाद मैंने क्या कंसीडर किया फिर मैंने hmm, जस्ट अ सेकेंड फिर मैंने सी एंगल का अपोजिट साइड देखा. hmm. अ, मतलब के उसके ऑपोजिट में 6 है. हम्म. ठीक है, तो के के ऑपोजिट में मैं 6 लिख देता हूँ. ठीक है, राइट है ये. फिर I think if you took AE as 5 then the question will be wrong. हाँ मैंने 5 नहीं लिया. मैंने मिड पॉइंट्स नहीं लिए. मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही लिए जो एंगल है देन उसका सामने वाला साइड क्या Hmm, होगा. फॉर लेट्स से अगर एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं उसका सामने वाला साइड hmm, हमारे पास विच इज 10 hmm, विच इज AC. और अगर हम फिर एंगल उसका अगर मैं देखूं इसके अंदर एंगल जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है विच इज hmm, एंगल E फॉर मी. hmm. एंगल E का सामने वाला साइड अगेन एंगल ई का सामने साइड हमें पता नहीं है, यही ना, ये ना. हाँ 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 हाँ. लेकिन हमें एक चीज पता है विच इज थीटा के ऑपोजिट वाला साइड. थीटा हाँ थीटा के अपोजिट वाला साइड इज BC विच इज 8. नहीं नहीं नहीं, थीटा इन स्मॉल ट्रायंगल जो हमें निकालना है वो उसको हम एक्स मान लेते हैं अगर. हम्म तो हमें बेसिकली इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना. हम्म. तो जस्ट सी कि ऑपोजिट थीटा इन ट्रायंगल एबीसी द साइड इज व्हाट. Opposite theta in triangle ABC the side is BC. Yeah, I have written, I have see the columns. So opposite theta, what is the side written? Opposite theta we have side DE and BC. Look at this. Is it 8? Yes, 8 is BC. Yeah. So Hmm. the way that similarity can be done simply in a way that you cannot make error is this. First write two triangles, which is what you did. Then write the all the three angles for each of them. Okay. सर एंगल्स हम यहाँ पे कौन से ट्राइंगल के ले रहे हैं द बिगर वन और द शॉर्टर वन. If the triangles are similar, then angles will be same. क्योंकि एक एंगल कॉमन है दोनों में विच इज ए एंड 90 डिग्री भी कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स में. एंड देन जो हमारा हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि 90 थीटा को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे 180 से तो हमारे पास 90 माइनस थीटा आता है विच इज इक्वल टू C विच इज एंगल के. Hmm. ठीक है. So in कोई भी triangle, if you have taken two triangles as similar, that means all the three angles are equal. All three angles will be same. If you have taken two triangles as similar, हम्म otherwise they won't be similar only. No, similarity का मतलब हम्म. their shape is same, so angles are same. Size is not same. यस सर. Okay, so हम्म then once you have gotten these three angles, then हम्म you figure out what are the sides opposite to them. हम्म. जी. So do I know the side opposite to 90? सर एंगल बता दीजिए 90 तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल है लाइक एंगल B और D और C. तो देखो, पहले मैंने एंगल ट्रायंगल एबीसी लिखा है ना. तो एंगल तो B होगा. पहले मैं ट्रायंगल एबीसी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स लिखूंगा. तो हम्म. ये 90 के ऑपोजिट 10 लिख दिया मैंने. हाँ. थीटा के ऑपोजिट क्या लिखूंगा? लुक एट ट्रायंगल एबीसी. ADE उसका ऑपोजिट विच इज AE. जी.
And then angle theta का opposite side, which is DE and BC. DE is X and BC is 8. And K के opposite side, which is हमारा angle C के opposite side is 6. And AD में K के opposite side is AD. ठीक है, परफेक्ट। एडीई में कौन सा है के ऑपोजिट? ADE के अंदर K के opposite is AD. ठीक है, ओके। आप एक बात बताओ, 8 के ऑपोजिट एक्स था ना? हाँ, 8 के opposite तो हमारा X था. मान लो कि ये एक्स है, तो ये हम निकाल सकते हैं, पता है। यूज द आइडिया अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, यू विल गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स। जी. Can you tell me what could be this side in terms of x? Uh, if we are talking about triangle ADE, and ADE के अंदर जो angle K है, which is E, and उसके opposite side is AD. Hmm. तो Yeah, हम correct. Okay, I'll give you a hint. okay. 8 by x is equal to 6 by AD. Now tell me. AD will be 48 by X. Uh, Hmm. sorry, AD will be 6 by 8 X. Hmm. 3 by 4x, Hmm. Hmm. right? Okay. जी. Okay. So if you have got Hmm. this, which is x, which is basically length of d, right? जी. जिसको हमने x माना, फिर ये 3/4x आ गया, करेक्ट। और ये कितना है? ये तो x ही है। Hmm. तो x प्लस 3/4x कितना आएगा? We got AD as 3 by 4 X, and करेक्ट, is हमारे पास पूरा length is 6. So we got करेक्ट, B as 6 minus 3 by 4 H, करेक्ट। which is 21 by 4. 21 by 4H. DB, if we are talking about DB. हाँ, we basically need to calculate dB only. So Hmm. how much are you getting? 7 by 4x is equal to 6. So x is equal to 24 by 7. Hmm. Hmm. Okay. So did you see what I did? How I got used similarity to get to solve this question? So we got AD as 3 by 4X, right? And Yes, we have AB as 6. तो we yes. subtract 6, मतलब 6 को हम 3 by 4 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास तो आंसर 21 by 4x आएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो dB भी तो x ही है ना? हम्म. मतलब ये dB क्या है, ये बताओ। डीबी हमने एक्स माना था क्योंकि स्क्वायर्स का साइड तो सारा सेम ही होता है. डीई एक्स है तो करेक्ट, डीबी एक्स होगा. करेक्ट। हाँ. तो x प्लस 3/4x 6 हुआ ना फिर? एक्स प्लस, सॉरी सर, आई गॉट कंफ्यूज. क्या हुआ है यहाँ पे? एडी हमारे पास 3 by 4x आया एंड बी. ओके. तो हमारे पास एडी 3 by 4x एंड बी कंसिडर डीबी एज एक्स. तो हमारे पास जो साइड आएगी टोटल 7 by 4x आएगी, विच इज इक्वल टू 6. एंड देन हम्म, गॉट आवर आंसर 24 by 7. यस यस, अंडरस्टूड. हम्म। ठीक है. ठीक है। जी तो जी. yeah, so this is one use of similarity which you did, which I did. So you हम्म. practice more questions which हाँ, is in the ebook, no? क्योंकि जी जी. ठीक है। So हम्म. when you practice, you will develop more confidence. हम्म. हम्म. Okay. So we'll move on to basic proportionality theorem. जी. So in basic proportionality theorem, what happens is if I make a triangle like this, such that it is a line parallel. So let's call it D. This is ABC. So if D is parallel to BC, then I can conclude that AE is this part by EC is equal to AD by DB. So deduce what happens is that these two lines, which is AB and AC, okay, they are being proportionally intersected. If you see, so suppose AE was 2 and EC was, let's say, 5. Then if this is 4, what can I conclude about DB? If this is 4, 10. Right. This is what basic proportionality means. Okay. Yes, yes. So usually what happens is that in geometry, you need to know
multiple theorems. That is the pain in geometry also. That there is a bit of remembering aspect, but the good thing is usually in CAD questions are not much in geometry. So that's the good thing. And So the question will hmm, be moderate to easy to moderate or moderate to difficult in terms of geometry. that no one can predict actually, but Mhm. the difficulty level has been more on arithmetic algebra as जी, compared to geometry, mhm, right? जी, Geometry has been moderate only. mhm, Okay, so this is the idea. But similarly, if I give you the idea for midpoint, I will draw a similar line, but this line will now be not. Uh, this line will be already bisecting them. Now there is a difference between bisecting and proportional. Okay, so when I say bisect, suppose this is 4, then this is also 4. yes, Okay, and if I say this is 8, then this is also 8. जी, So now, if such a line exists, which is like bisecting the two sides which is meeting on, mhm, then what we say is that this line will be parallel to the base. That is the midpoint theorem. So what midpoint matlab, this line is already from the midpoint, जी, and then we conclude that it is parallel. Okay, we conclude it is parallel, and we also conclude that it is parallel, and DE is half of BC. These are the two conclusions we make when the line is already from the midpoints. जी, sir. Okay, Yes. perfect. So एक small example मैं खुद ही solve करने का try करता हूँ. So on basic proportionality and midpoint. So let me just try and solve this one. So there is some kind of a figure which is drawn in the form of a quadrilateral A B. So this is a quadrilateral A B C and D. Now it is known to you that BC is joined, so you basically have this kind of a figure now. This is XY and this is PQ. So I'm going to solve this. Just see how I'm solving this using the idea of proportionality. So it is known that XY is 14 and XY is parallel. So if XY is parallel, will I use basic proportionality theorem? If it is parallel, then we can use basic proportionality theorem because Perfect, bisect वाला perfect. चीज तो बोला ही नहीं है. Yes. If this is 2 and this is 3, and let's say I tell you that BC is 35. Okay. BC is So 35. yeah, so you will see that I can actually figure out the length of this is XY is known to me as 14. हम्म, Okay. जी, And if this proportionality, if you notice AX upon XB, that is 2 is to 3, जी, right? That would also be true for AY upon YC, AY upon this AY that you see upon YC, जी, 2 by 3. जी, And so also the good thing is if you look at triangles AXY, हम्म, that is going to be similar to triangle ABC. जी, Yes, हम्म, and जी, जी, and it is also connected to the same idea which I are discussing now. So हम्म. iska matlab I can also say that this length XY upon BC is will be the same ratio. Length of XY and BC will be the same ratio of AX or XB. Yes, because they are similar, right? जी, So AX by AB, not XB. AX by AB का ratio जो होगा that will be same as XY by BC XY and because of BC. similarity. Yes. This is coming from similarity. So जी, that means if this is 14, then I can also conclude, which is already given. I don't need to conclude, but it was given 35. हम्म, So 35 matlab I did it directly just to calculate 2 by 5 is 2 by 5 is
14 by 35. 7 into 2, 7 into 5. जी. मतलब जैसे ax is 2, ab will be 5, right? Because this part is 3. हम्म, जी. Perfect. So basic proportionality and similarity. This is what I just used over here. Now you see. I can also give you one more ratio, which is the ratio of dp upon pb. So So also in that the question, AY and YC will be 2 by 5. I mean 2 by no 3. a by yes 2 by 3. AY and YC will be 2 by 3 क्योंकि हमने वो proportionality लगा के we got the site, right? Yeah, and it is connected. If you look at the idea of similarity also, no, proportionality हम्म. similarity से derive हुआ है. हम्म. अगर वो 2 by 3 मान लो नहीं होता, मान लो कि वो कुछ और होता, 2 by 4 होता, हाँ. तो क्या सिमिलैरिटी रूल अप्लाई हो पाता फिर? अगर 2 by 4 होता तो सिमिलैरिटी लग पाता कि नहीं लग पाता, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, नहीं लग पाता. पर बट वी नो दैट दे आर सिमिलर नो इन शेप. हाँ. हाँ. तो तो फिर इसका हम. मतलब वो और कुछ हो ही नहीं सकता फिर से. हम्म. बिकॉज सिमिलैरिटी में हम वो भी सीखते हैं ना कि प्रोपोर्शन ऑल द साइड्स आर व्हाट. सेम. यस, प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल. रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम. हाँ क्योंकि 2 by 6 आता तो विच इज नॉट इक्वल टू 14 by 35 एनी हाउ 2 by 5 के इक्वल तो होता ही नहीं. यस यस, दैट्स द आइडिया. यस. तो ठीक है. इस हम्म. लेवल पे व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन यू विल सी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. जी. अभी सर्कल्स में आई विल शो यू सम टेंजेंट्स का लंबा चौड़ा फॉर्मूला, बट इट इज वेरी हाँ. सिंपल फ्रॉम पाइथागोरस ओनली. अच्छा. ठीक है. सो दैट्स हाउ द दिस इज द फंडामेंटल आइडियाज. ठीक है. ठीक है. नाउ let's say I give you one more from the same example that I'm solving. हम्म. Let's say dp by pb is given to you as 3 by 4. ठीक है. D3 by 3 by 4. जी. Yeah. So can you tell me the length of pq if it is known that pq is also parallel? DQ is all sorry PQ is also parallel to PC. This If is it yeah if I give you a question like that. जी सर मैं बताती हूँ. We have PD and we have BD which is Hmm. 3 by 7 and it Hmm. is equal to the PQ side and BC which is 35. So we got 15 as answer Hmm. PQ. Okay, good. So but the question is not so simple. So I'll show you what the question is asking you. थोड़ा Hmm. सा बस not so difficult also. Hmm. Just a small twist here. The small twist is that it is not known to me that this is parallel. ये जो line PQ है ना, This is not parallel to PC. BC. मतलब it is not given to that is parallel. वो given नहीं है. अच्छा. ठीक है. तो अगर वो given नहीं, that means I only know one thing, which is DP by BP का ratio. So DP by PB, which is 3 by 4. हाँ. 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 Perfect. जी. Okay. जी. Now what is AX? Not AX. So what I can do here is suppose that this part is 3y. Okay. जी सर. If this part is 3y, then what can you say about BC and assume now that they are parallel? I've just changed the variable over here, which is Hmm. 3y. Now, if you assume they are parallel, what is BC according to you in terms of y? But, In terms of y, if hmm, PQ is 3y and it is parallel to BC. BC, Hmm. will be equal to. I have to think for it. Yeah, take your time. So we got y as 5. Yes, that is the question only. That is what I was going to solve. So you, Hmm. you already solved it. This is the right answer. जी. Nothing but a simple application of basic proportionality theorem, which But is sir, just let's take the say ratio. y हमारे पास 5 आया, उससे पहले भी we got the value 15 as 15. But Yeah, correct. Because I already gave you 35. इसको हाँ. if I had not given you, then you will have to assume 14 as let's say 2x and 3 and this as something 3y. Then this will come in terms of x, this will come in terms of y.
Okay, then you will get x and y. But I made it a little simpler. I हम्म gave you 35, हम्म and then I found out the value of y. बट सर हम वो वाला प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के भी तो कर सकते हैं ना, जैसे हमारे पास डी पी एज 3 है एंड वी गॉट डी Hmm. पी एज 4, और Hmm. हमें पता है कि these lines are parallel, like PQ is parallel to BC, हमें PQ Hmm. निकालना है और हमारे पास BC का वैल्यू है, तो हम वो प्रोपोर्शनैलिटी Hmm. लगा के तो PQ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो why we are considering this variables like x and y something. Right, right, right. You're right. No, this is just an example to show you अच्छा, कि how do we use simple application of BPT. ओके, So it's a very simple application of basic proportionality theorem. ठीक Okay. है. Then let us understand these two theorems, Apollonius theorem and angle bisector. So Apollonius theorem, if you remember last time, is like a formula is slightly difficult to remember, but there's a small trick there. So if I make A, B, C, let's call it D. जी. Remember that this is the median. Only then you can apply this theorem, हम्म right? Then what do we know about AB square plus BC square which is is nothing but equal to, twice of something called AD square yes, AD plus square plus A base का half का BC, square. okay, base का half square. Yeah, you can also use it as a DC interchangeably, which is fine, which is same as base का half. हाँ ठीक है. So AB square and then BC square, which is equal to twice of median. I mean twice of median का square and BC का half square, which is DC. ठीक है. Yeah. जी. इसमें भी आई कैन जस्ट अ स्मॉल बेसिक प्लग इन वाला फॉर्मूला का क्वेश्चन है एक. हम्म. I can just give you some random values of AB and BC and AD and then find out the length of BC. Those kind of things. So Usually questions of इसमें हमें लेंथ किसकी निकालनी होती है? इसमें see three things should be known to you. Three things. जी. I can give you the value of three things and I can ask you the value of BC, let's say. ओके. और हम्म सॉरी BC तो पता ही है हमें. हम्म. इसको AC कर देना. AC है ये, सॉरी. AB plus AC है ना. AB and AB square and AC square. Yes. हाँ. तो basically I can give you the value of AB, AC and AD, let's say. हम्म. And then you can have to I can ask you what is the value of BC. जी ठीक है. That will be a simple user formula. But questions इतना simple नहीं होगा. हाँ. Usually questions में क्या होगा कि you will have to first come at this length of median, let's say. हम्म There will be some more data points given to you, so that you derive the length of median first. हम्म And then after deriving the length of median, you can use this formula to get to the answer. That is two-step question. हम्म. And then if I make it equilateral triangle, तो उसमें और चीज आ जाएंगी. So ओके. it can be usually generally क्या होता है ज्योमेट्री में two step का मतलब you understand, right? You you Yes. you reach one thing and then from that you reach to another thing. You have to use that thing and to find the answer again. Yes, yes, correct. हम्म. तो सर इस क्वेश्चंस में लेट्स से मतलब अगर हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चंस में, तो हाउ वी कैलकुलेट दैट? No, तो then there will be much more data point given to you. एक क्वेश्चन है लास्ट में. अच्छा. So फिर मैं मीडियन निकलवाने के लिए I'll have to give you more information. No? How will you calculate median first? हम्म So maybe I can give you isosceles triangle है या हम्म फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें यू हम्म. नो दैट अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो मीडियन होता है हमने वो, पढ़ा था ना कि ये हाँ, मीडियन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है AB बाय ये सी. हाफ होता है. तो और मान लो, हाँ, तो मान लो कि मैं इनडायरेक्टली में कुछ और दे दूं जिससे कि तुम्हें ये मीडियन का फॉर्मूला मीडियन निकालने के वो मिल जाए. ठीक है. ओके. द हम्म लास्ट पार्ट इज एंगल बाइसेक्टर. हम्म तो it's again theoretically quite simple to understand. Angle bisector, you make a triangle and then a line that is bisecting A, B, C. जी. So we will say that AD is the angle bisector. हम्म. And if I can also make one more, so let's say BE. So I BE. can say that BE is the angle bisector. So ठीक. you can have three angle bisectors, and angle bisector तीन हो सकते हैं that we know. हम्म अब theorem says that if you have an angle bisector given to you, हम्म so I'll give you with an example also. Let's say this is 12, this is 18, हम्म and let's say DC is given to you or BC is given to you as 15.
Hmm. So three sides are known to me. So the theorem says that AB upon BC will be same as AE upon CE. AB CE or is same as BC and AE equals to CE. yeah. Okay. AB. ठीक है. So did you understand the theorem? So what is happening is this theorem is how it is coming is Hmm. look at this angle A. हाँ. Okay. So if you look at this angle A, what are the Hmm. two sides on which this angle was formed? Two sides on which this angle is formed. Yeah. AE, नहीं नहीं AB and AC ना. AB and AC में दोनों पे ही बन रहा है सर एक तरीके से तो अगर हम पूरा कोई एक्स कंसिडर मतलब करें. एंगल के लिए दो लाइन चाहिए ना तो ये हाँ जैसे हाँ तो वो हाँ. दो लाइन कौन से वो पूछ रहा था मैं। AB and ये जो AC. एंगल ए ये जो एंगल ए है इसमें AD दो and लाइन कौन AC. सा है। AD and AC. AD and AC. नहीं वो तो ये छोटा एंगल बन गया वो तो एंगल डीएसी बन गया एंगल बीएसी बताओ ना। एंगल बी. ए सी। अच्छा बी ए सी के लिए हमें बी ए और ए सी चाहिए लाइंस. करेक्ट बी करना और है. ए सी चाहिए। करेक्ट। हाँ. और ये जो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है तो हम्म. मान लो कि हमें ए बी और व्हाट डिड यू से बी ए और ए सी ना। बी ए परफेक्ट। So ए let's सी. write it over here. BA want AC. ए सी Okay. यस. हाँ. Okay. Now जो ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर है वो कौन से बेस पे जा रहा है। this AD, the back bisector, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। is on base BC. तो बी डी बाई डी सी ये दोनों उसी उसी को बाइसेक्ट कर वो करने के बाद मिलने के बाद बन रहे हैं ना बी डी और डी सी। BC का. हाँ BC का half of part each. हाफ पार्ट नहीं है मतलब इट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ Okay. इट्स नॉट मिड पॉइंट। जी. परफेक्ट। तो इस ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी बहुत ये भी एक लॉजिकल तरीके से आता है। हम्म. वो तरीका क्या है इमेजिन हम्म. इमेजिन दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है. ठीक है। कुछ एंगल मान लो कि ये 80 या 90 या 60 मान लो चलो। हम्म. अगर हम यहाँ से लेंगे एक एंगल बाइसेक्टर इट इज हम्म. ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। जी. तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ यू टेक द एंगल बाइसेक्टर नो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। हम्म. हम्म. एंड उसका भी रीजन है मतलब देखो ये अगर एक्स है या थीटा है तो ये भी थीटा है और ये दोनों 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है। Yes. This is तो 9. This is 90 minus theta. Yes. करेक्ट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भी मीडियन होता है ना दैट इज सेम एज एंगल बाइसेक्टर दैट इज सेम एज ऑल्टीट्यूड। हम्म. ठीक है। तो अब एक बात बताओ क्या ये दोनों भी सेम है। Yes. सेम है परफेक्ट। हम्म. अब मान लो कि ये ए बी था तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी बाई बी सी था ए सी था Twice हो जाएगा. वही बी डी बाई डी सी है क्या ये बोल सकता हूँ मैं। If we are considering AB and AC is equal to BD by DC, yes, नहीं yes. आई एम जस्ट कंसिडरिंग ए बी एंड ए सी आर इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट्स इट नथिंग हाँ एल्स। हाँ हाँ. मान लो दिस इज 8 दिस इज हम्म. 2 एंड दिस इज 2 विल दिस हम्म. होल्ड ट्रू। Uh, yes. ठीक है मेक सेंस। हम्म. अब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अभी अगर मैं इसको आइसोसेलेस हटा दूं ना मान लो कि मैंने ऐसा लाइन बना दिया इसको हाँ मैं रिमूव करके बनाता हूँ। हाँ. तो सपोज एक आई मेड अ स्केलियन ट्रायंगल ओके। हम्म. स्केलियन ट्रायंगल में थोड़ा सा ना इधर टिल्टेड है ठीक है। तो मैंने हम्म. एंगल वेक्टर बनाया हम्म. तो नेचुरली क्या होगा कि ये साइड बड़ा हो जाएगा। हाँ. And then वो है ना equal. बाय बाय सिमेट्री यू विल अंडरस्टैंड दिस। हाँ हाँ. ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि जितना ज्यादा अब देखो अगर ये साइड बड़ा होगा ना तो ये भी साइड बड़ा होगा कोई भी हम्म. समझ में आ रही बात। तो हाँ. इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो हमारा सर आप इस ट्रायंगल को पॉइंटर्स दे दीजिए ABC so that I can understand which side हाँ are you talking एक about. मिनट। हाँ देखो मैंने इसका ना इधर बहुत जस्ट हाँ मेड अ स्मॉल एंगल लाइक दिस हाँ. देन मेड अ
angle bisector. Okay. हाँ ठीक है. So tell me one thing: is this smaller as compared to this? Oh yes. Triangle ABD, we are considering this is smaller than ADC portion. हाँ. Is this also smaller than this? हाँ, the sides will also smaller than the larger Yeah. sizes. हाँ. तो वो बाय सिमेट्री होता है. बाय सिमेट्री मतलब अगर इफ यू हाँ. गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, यू विल हम्म. रियलाइज कि जो भी एंगल बाइसेक्टर बनेगा ना, वो हाँ. देखो हमेशा जहां पर भी आके मिलेगा ना, वो हाँ. डिपेंड करेगा कि ये साइड कितना बड़ा है. तो ए बी बाई ए सी हाँ. विल बी सेम एज बी डी बाई डी सी. BD by DC. जी जी. ओके, जो ठीक है. मतलब तो दिस शॉर्टर इज. साइड है, शॉर्टर साइड का पोर्शन हमारा BD है. शॉर्टर साइड का हाँ. पोर्शन ऑलवेज इक्वल होगा शॉर्टर साइड के, लॉन्गर साइड का पोर्शन ऑलवेज इक्वल होगा लॉन्गर साइड के. जैसे AC बड़ी साइड है, तो हम्म. उसका जो एंगल बाइसेक्टर वाला पोर्शन है विच इज GC, वो भी बड़ा है. हम्म. हम्म. ठीक है. ठीक है. करेक्ट. तो दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके. जी. ओके. तो इसमें बस एक एग्जांपल पे आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल ऑन दिस एज वेल. इसमें एक और होता है जब एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल की बाहर हो जाता है, वो भी केस होता है. वो आई विल शो यू आफ्टर दिस क्वेश्चन. So let's say, so I'm giving you one example. The example is on the same angle bisector theorem. This is the triangles A, B, C. Okay. Now you know what the theorem says. जी. D So let's and call it I. हाँ. So you know that AD and BE are AD and BE are the angle bisector. Yes. perfect. I is the, let's call them, point of meeting of these Intersection two. point. इन सेंटर कहते हैं अगर तीनों होता तो जी. ये निकालना है. हमें BI और IE निकालना है. यस. ठीक है. ट्राई करो CR. 2 मिनट. ठीक है.
Okay. Okay, Khushi, let's see. So this is again a two-step question, okay? यस सर हम मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि पहले हम आई गेस Hmm. सारी मतलब एंगल बाय सेक्टर से हम लेंथ निकालेंगे। लेट्स से अगर ए बी सी ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं तो Hmm. ए बी लेंगे ए बी विच इज ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू बी डी Hmm. बाय डी सी, तो उससे बी डी और डी सी का रेशियो आ जाएगा। Hmm. एंड देन उसके बाद हम दोबारा से एंगल बाय सेक्टर लगाएंगे फॉर ए ई एंड ए ई एंड ई सी, और उससे हमारे Hmm. पास ए ई और ई सी की साइड आ जाएगी विच इज 4 and 5। 8 and 10. आ, हाँ वो मतलब यस 8 and 10। परफेक्ट। उस ये अप टिल दिस पॉइंट यू आर राइट। हाँ उसके यहाँ तक बाद पहुंच गई, उसके बाद आएगा सिमिलैरिटी लगेगा। उसके बाद ट्रायंगल ए बी ई में सेम चीज लगा दो, क्या एंगल लगा? बाइसेक्टर। अच्छा ए बी ई में दोबारा से एंगल बाइसेक्टर लगा दो। यस। एक सेकेंड, एंगल ए बी के अंदर दोबारा, हाँ ओके यस वी हैव 12 and 8, एंड उसके बाद हमारे पास रेशियो आ जाएगा एज 6 मतलब 3 और यस। 2। जी 3 and 2, यस, सो दैट इज योर आंसर, ओके। ओके ठीक है अंडरस्टूड। बट सर हाउ वी गॉट 8 and 10? यू सेड 4/5 नो? अच्छा तो फिर आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया बाय मतलब इनटू 2, मतलब ऐसा क्यों? बिकॉज ए सी इज हाउ मच? AC इज 18, या जी जी ठीक है। जी ठीक है। Perfect. So here we'll now just see some. So हम्म theorem was this much only, and this is your all the story of the triangles. Now हम्म what I'll do is I'll quickly give you how many questions I have. Three, four questions on triangles. हम्म। So you try this question. हाँ ठीक है।
सर इसके अंदर we have to use in radius का formula which is semi perimeter minus hypotenuse, and for semi perimeter we have to calculate all the sides. So I'm just uh, I mean processing कि कौन सा formula लगेगा. We have sine का formula, we have uh, actually there are a lot of formulas. तो मुझे बस आर यू अवेयर अबाउट कोसाइन का फॉर्मूला? नो सर ये नहीं पता मेरे को. I think that is why I gave this question. I'll tell you the formula also. Okay, How many sides you know? I think A, one B, only. C. AC only, which is 12. This is 12. A, C, B is 30. So what is 12 cos 30? 6. Uh, 12 cost, I mean, sorry, 12 cost 30. Cos 12 cos 30 30, 12 is, root. cos 30 is 1 by 2. Yes, yes. So we got, नहीं नहीं, sin 30 is 1 by 2. Cos 30 is root 3 by 2. okay. एक तो मुझे याद तो ये रखना 6 पड़ेगा. root 3 मुझे हो याद गया. नहीं साइन कॉस क्या होता है, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ. So sin 30 is 1 by 2. Hmm. And So, उससे we got, hmm. जी. So if you remember that thing that we discussed, 30, 60, 90, if you हाँ. remember. So हम्म. opposite to 90, if you have 12, then you Yes. can figure out these two. So the ratios is like this: 2, 1, root 3. हम्म. Now you can tell that all the sides. एक second, sir. So for the 60, we got as 6 root 3, Hmm. and 90 we got 12, and 30 we got which is 6. Hmm. Okay. So you have the. Can Mm. you now you can find out the same perimeter also, Yes, yes, yes. and hypotenuse is also known to you. Which is 12. Perfect. Thing. After this also you will have one more small thing if you can get to this. So this is your in radius, no? Yes, हमें diameter पता लगेगा, I guess. नहीं. Okay. So Uh, so you first get to this step and quickly and say see if you are able to get the answer OB. okay. सर रेडियस तो √3 - 21/2 आएगा. 3 माइनस रूट नहीं आया, 3 माइनस रूट 3 ऐसा कुछ. 3 the √3 - 21 I got, because हाँ दिस इज कमिंग, ये आना चाहिए 3 रूट 3 माइनस 3. 3 √3 - 3. दिस इज मोस्टली एन एडिशन, मतलब ये इसको करोगे तो यही आएगा 6 प्लस 6 रूट 3 प्लस हम्म. 12 बाई 2 माइनस 12. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू ना. हम्म. तो दिस यू शुड गेट. तो ये तो एडिशन है, ये तो यू विल गेट वट एवर यू गेट, जस्ट चेक वंस. So जी. 3 root 3 minus 3 was the answer. And then how do you still find the radius is? So I got √3 - 3 - 3. Yes. Hmm. Hmm. Are you aware about these kind of questions where we circles में हम का बहुत सारी बात करेंगे इसमें कि अगर Hmm. ऐसा कुछ है, मान लो ये चीज R है, ये And चीज R है, तो so ये चीज हम far, निकाल सकते हैं, yes. ये पता है? नहीं पता सर मेरे को. ये हम सर्कल्स में बात करेंगे, यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं वैसे. कि ओके. अगर अगर मान लो ये R है, हाँ. ये भी R है, तो क्या ये वाला भी R रूट 2 नहीं होगा? हाँ, if we apply Pythagoras, is that what you are हम्म. saying? हाँ, तो हमारे यस पास वो करेक्ट, भी पाइथागोरस होगा. ऑर्डर.
हाँ So same तो thing when R, you if you have drawn the figure, you will get R root 2 as the answer for OB. okay, so we got root 3, 3 root 3 minus 2, which is R, into root 2. Hmm. Into root 2, yes. Chal, And it is very strange. मतलब बहुत strange radius नहीं आया मतलब root 3 no, मैंने so हाँ options. हाँ No, this is like normal for cat. You will see options in root and sometimes not हम्म even the direct answer. For example, हम्म this is 3 root 3 हम्म minus 3, right? So I हम्म, can in fact give you a different option also. I can give you an option like this 3 root 3 plus 3. So इसमें नीचे ऊपर अगर if you do you would know हाँ एक this, so rationalize this will वाला change. हाँ 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 So if you multiply, this will become 3 root 3 ka square, and that हम्म is what 27. So this will हाँ become 18 by 3 root 3 plus 3. हम्म Further, you will simplify. It will become, you can take this 3 as common. So you'll हम्म get 6 by root 3 plus 1. हम्म ठीक है? तो into मेरे ऑप्शन में ये होगा ही नहीं कैट में. मैं आई कैन हाँ गिव यू दिस. जी आई एम गेटिंग इट. सिंप्लीफाइड एंड वर्जन होगा तो अगर आर रूट टू करोगे तो ये सिंपल 6 रूट 2 बाई रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा आंसर. जी ठीक है, परफेक्ट. हम्म तो let's go to the next question. You have an equilateral triangle here, and this हम्म is the ratio known to you. हम्म You have to find AD upon AD ratio AB. ओके सर सर आई एम गेटिंग एज रूट 3:2 Okay, let's see. मतलब आई हैव अप्लाइड वो वाला थ्योरम व्हिच इज अपोलोनियस थ्योरम जिसके अंदर Hmm. इफ द कंडीशन इज गिवन कि BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Hmm. BC यानी कि मिड पॉइंट पे होगा This is A. 1 by 3. So it is 1/3. Oh, I Yeah, thought it's 1 this by is 3. 1/2. मुझे बहुत ही छोटा दिख रहा था. Okay, sir, let me Okay. try it again. I guess I got the concept. This question is for a new idea. So this is अच्छा, known as a cosine rule. So okay. this is a cosine rule. Okay. गलत हो गया. We have not discussed this, so I give you this question. Okay. Cosine rule is basically telling you that if you know two sides A and B, then you can figure out the third side if the angle between them is known to you. So a square plus b square minus 2ab cos theta. So what is your A? A and B are two sides. Okay. सर एक सेकंड दोबारा से बता दीजिए. मैं लिख रही थी तो मैंने इतना सुना नहीं. एक बार दोबारा बता दीजिए. हाँ, पहले हाँ so there is this rule called cosine rule. हाँ इसमें if I know अगर हमें दो साइड पता है, if I know two sides A and B, हाँ okay, then I can figure out the third side C. हाँ ठीक है. But I should also know the angle between A and B. हाँ ठीक है. This is the cosine rule.
Okay. One question has had come. I mean, this is a useful, very useful one. So Hmm. Hmm. Okay, so we have to find out the other side, which is in this AD, if we consider the angle AB. But sir, इसमें तो हमें एंगल ही नहीं given है कोई. अच्छा, correct. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल 60-60 होंगे. Yes, yes. ठीक है. तो लेट्स से अगर हम, सर मैं ट्राई कर लेती हूँ एक बारी, अगर मुझे आ गया समझ. Take 2 minutes. You can try and see. हम्म. Okay, so Khushi, I gave you a, I can give you a small idea. So because it is equilateral, take any side as 3, 6, whatever you want. सर मैं समझ ही रही हूँ, जैसे लेट्स से इफ वी हैव एबीसी के अंदर हम्म 60-60 एंगल ईच है, और अगर हम्म ए एंगल को मैं कंसीडर करूँ, पर वो नहीं एंगल नहीं, बाय हमें निकालना क्या है? हमें निकालना व्हाट इज द अननोन थिंग फॉर अस? एडी. एडी. सो अगर हमें एडी निकालना है तो सपोज लुक एट द ट्राइंगल ए बी डी. तो मान लो कि ये, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जी सर. व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ बीडी? 1. 1, बिकॉज आई अज्यूम, ये मैंने अज्यूम करा. यू कैन टेक इट जी. 6 ऑल्सो. यू कैन टेक इट यस. एनीथिंग. ओके. ठीक है. तो हमें निकालना जब एडी है तो हम्म. फिर तो हमें ये दोनों देखना पड़ेगा ना, ये जो है ए और ये जो 1 है. करेक्ट. हम्म. हम्म. फिर 2 AB cos 60. जी, ए एंड बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 3 एंड cos 60. करेक्ट. जी. cos 60 is root 3/2, right? No, नहीं नहीं, 1 by हाफ. 2, 1/2. हाँ. सो इसको व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर. सो जी. दिस विल कम आउट टू बी फोर. अराउंड 7.
No, so I guess it's four. नहीं, एक second. Hmm? Yes, seven, seven. Yes, you're right. Seven. So, so that is your answer basically. Hmm. It's मतलब थोड़ा सा you will understand how to understand the Conceptual question better. based, I mean say मतलब थोड़ा formula based कह सकते हैं ऐसे. Formula based, but how to apply the formula is important here. To take BD, right? हम्म. ओके सर, सो इसके अंदर हमने एंगल बी लिया है फॉर दिस 2 into 3 into 1 cos 60. एंगल बी वी आर कंसिडरिंग, राइट? Yes, right. ठीक है. वो एंगल जो होगा ना वो इन पे डिपेंड करता है, इस पे. It has to be in between the two sides that A and B have taken. ओके, द साइड्स द ए Hmm. एंड बी का बेस Hmm. पार्ट. ओके. Correct. Okay, this question is easy. I will solve it. I'll solve it for you. So it's a simple application of sine rule. If you remember sine rule, we can use this to find area. जी. So it's known as half AB sine theta. साइन थीटा, यस. Hmm. एंड द एंगल So दैट इज गिवन इज 135. yeah, but in this case, it is sine 130. So हम्म. if you when you do trigonometry, there is one small यस यस, segment हम in geometry. रेडियंस वाला चीज शायद से. Yeah, so we can think of it as this is same. So basically sine 135 की जो 90 वैल्यू होती है माइनस ना. 135 करेंगे तो वी गॉट -45. और वो 90 से कम की रेंज में है, तो हमारे पास एक हाँ, टेबल होता था. करेक्ट करेक्ट. हाँ. तो that is trigonometry में you will discuss, but for now हम्म. you can think of it as sine 80 minus 45 and 45. सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग लॉट. हेलो. Yeah, hello. जी सर. Correct. So हम्म. this and then this is a sine rule that I have used in this question, जी जी. हाँ सर, right? इसका आंसर तो यही आएगा ना. वी गॉट 1/√, विच साइन 45 इज 1/√2. Hmm. पॉजिटिव Yes. 1/√2 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 90/√2. Yes. Yes. ठीक है. 45 root 2. 45/√2. नहीं 45 into root 2. हम्म. जी. Okay. So the ratios. Again, this also is a question. You may want to read once. I'll just solve it quickly. It's a simple question only. सर, विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर Fourth. 4. हाँ, Yeah. ठीक है.
Mhm. Mhm. Okay. Question number 4. Again on a sign rule question. See if you can get something on this. Yes, sir. Sir, is it 100 by 144? मतलब इसके अंदर हम एंगल बाइसेक्टर वाला एंगल बाइसेक्टर कह रही हूँ दैट proportionality theorem if we use we got E and AC Okay. as Uh, 10 uh, and okay. 12. Let me. एक बार मैं. You see this. A B. A ratio of AD by DB is known to you as 2 by 3, no? And BE by AC is how much? सर हम ऐसे बना सकते हैं क्या लाइक A B and C मतलब AC on base ऐसे मुझे समझ कम आएगा हाँ Okay, okay, okay. हम्म, मतलब मैंने So, ट्रायंगल ऐसे बनाया तो मुझे थोड़ा टेढ़ा होके देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड है yeah, आई मीन yeah. AC ऑन बेस एंड बी ऑन टॉप मैंने ऐसे लिया है You have taken AC on base. क्योंकि हमें वो दिया है ना AB and BC का आई मीन वो Okay, okay. जब आप बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो पॉइंटर्स हैं Yeah, हम्म, yeah. AB. नहीं, AC you're saying base. हाँ So हाँ यस AB. यस AC and B on top या D is your. हम्म, Okay. हाँ So basic proportionality you cannot use because ratio is not same, no? हाँ वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के लिए क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, पहली पहली बात तो एंड पैरेलल दिया पैरेलल हुआ है हमें क्या? गिवन नहीं है यस उसमें पैरेलल होने के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि रेशियो सेम होगा। हम्म और मिड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी तो इस पैरेलल का होना, इट्स डी शुड बी पैरेलल देन यू कैन यूज। हम्म हम्म so we apply similarity then in this case बट फॉर सिमिलरिटी एंगल्स, angle how same which property will you use for similarity here? Do you know that this angle is same as this angle? Is it known? hmm hmm Not known. Again, it correct so not no similarity, no basic proportionality, no hmm midpoint. hmm Then what else? What can you? So it also depends what is being asked.
Hmm. Here you are being asked area of triangle. So you will A figure out, triangle. जी. you will see, you will first think कि यार how can I figure out DEB का area? What is known to me to get to that? या ABC का एरिया, ये इजियर है। तो एबीसी का एरिया का अगर मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ तो मुझे देर आर सर्टन थिंग्स आई शुड नो हाफ बेस हाइट। इज इट नोन टू मी? Yes. नो इट इज But नॉट नोन टू height मी। नहीं है, height नहीं है मेरे पास. हाइट नहीं है। Hmm. देन आई विल सी कि so you will realize that there's one thing you can use which is half AB sin theta. At AB or BC, तो AB and BC ratio is known to you, no? This is 5x, let's say. This is, let's say, 9y. This is known to you. Yes, no. Okay. But the angle तो हमें नहीं given है, तो हम sin का formula किसे लगाएंगे? That is the question that you have to think. This question is not asking you the ratio, exact ratio. It's asking you relative, no? Relative. Relative means look at the triangle DEB, correct? For हाँ. DEB also you can say 3x and 4y. Two sides are known to you. Yes, yes. And for both of them, angle B is same. Let's call it theta. Hmm. So now figure out the ratio. Okay, understood. If we consider DBE, we have 3 and Hmm. 4. And if we Hmm. consider ABC, we have 5 and 9. And angle Hmm. common है, तो दोनों का cut हो जाएगा angle. Hmm. 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 So what do you get now? 12 by Hmm. 5 into 9, 45. 45. Now Hmm. if I tell you Hmm. that the area of ABC is 90 centimeter square. Area of ABC is 90. Centimeter square, okay? Hmm. Then what is the area of DBE? DBC or DBE? DBE. Okay, so we have given that angle B is 90. No, no, no. Hmm. ये 12 45, what is it? 12 by 45 is the sides that we got. No, is the ratio of area, no? सर हमने स्क्वायर तो किया ही नहीं ना. अच्छा हाँ, हमने अप्लाई कर लिया साइन थीटा वाला फॉर्मूला. यस यस. It is the ratio of area. यस यस. So if ABC area is 90 centimeter square, then what is the area of DBE? Okay, so if the area of ABC is equal to 90 square and Hmm. then the area of 24. Correct, correct. ठीक So those kind of things can be asked in the question, right? है. Then, but look at where you started and look at what the question is asking you. हम्म. Correct? So ये हम्म. तो this is just a ratio. I could have instead not you asked you. I could have asked you further on this that if if the instead of ratio I could have told you if the area of let's say ABC is 90, then what is the area of D parallelogram this part? I could have asked those things. Yes, Are you sir. getting In my that point? we will subtract the We uh, will subtract, but what are the steps before that? That is important. What are the steps yes, preceding that? we have to The derive the preceding, value of DE and I mean the area. We have to derive the value of the yeah, but the even this step is the most important. This step to area. first to get to the ratio. जी. Without the ratio, you will not even get the absolute value Hmm. because no number is known to you. All you do not know any side ka number, no length. Hmm. So that is what cat will. That this is a small example of Hmm. somewhat cat question. Okay. Okay, acha medians. So I gave you this question for a small formula. Hmm. So you can have a read this question. I'm writing the formula for you. So formula. So it's a small formula that is this.
This is quite simple. You may use calculator here. Don't like waste your energy. Yes, I'm using it. इसका आंसर रूट में ही आएगा क्या? Hmm. जी. सर उसके अंदर 4√7 एंड 145 रूट है क्या? इज Yeah. इट So 4√7? it's root 145. हाँ This is हाँ. 4 root 7, ठीक है. and this is the one B. वी हैव टू फाइंड आउट. Hmm. सर आई एम गेटिंग 1.28. आई मीन x का वैल्यू which is 330 by 257. Okay. What is the answer? एक बार फिर से बोलो. इफ फ्रैक्शन में 330 by 257 फ्रैक्शन में, Hmm. और हमारा यूजुअल ऐसे पॉइंट में, तो आई एम गेटिंग एज 1.28. मतलब ये तो कैलकुलेशन की बात है, वो तो चेक कर लेना. हाँ मतलब हाँ हाँ. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है. आई थिंक दिस इज गुड इनफ ट्राइंगल्स के लिए. आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, and some advanced questions I might do at the end of the course. ठीक है. So जी so सर. far so far it's good. हम्म. जी. So we started with right angle triangle, right? जी. And right angle triangle में similarity is important. Then multiple theorems, and this is why geometry में थोड़ा सा याद करना होता है. Multiple यस theorems सर, are देयर over आर there. लॉट ऑफ फॉर्मूलाज एक्चुअली. हम्म. ठीक है. फिर कुछ चीजें हमने देखा कि जो ऑल्टीट्यूड्स इन सर्कल इन रेडियस वो सब चीजें. ठीक है. तो you will see that जनरली डायग्राम्स मतलब सर्कल्स और ट्राइंगल्स ना ये मिलके भी आते हैं कभी कभी. समझ रहे? मतलब फॉर एग्जांपल, यस सर. if you have, let's say, a triangle inside a circle, right? Those kind of questions where there is not just one element of triangle but also an element of circle, that those things. So for that you also need to know circles. So but ठीक है, अभी तो it's like not, we are just trying to understand first. So next class I will do circles. I will just maybe 15 minutes I'll try to talk about some concepts which is जी. something that you would know I think already. हम्म जैसे रेडियस तो पता ही होगा मेरे ख्याल से. हम्म. तो रेडियस यू नो, डायमीटर यू नो, सेगमेंट यू वुड नो. इफ आई हैव अ सर्कल. सेगमेंट और वो सब, दैट इज हम्म. कॉल्ड, ठीक है. पे कुछ होता था. वो ओके, नो प्रॉब्लम. तो टेंजेंट. जैसे सब सर थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज मैंने हाँ नहीं पढ़ा है ज्योमेट्री आफ्टर स्कूल. ठीक है. सपोज हाँ आई ड्रॉ लाइन ए बी. ठीक है. हाँ. हम्म तो दिस इज द कॉर्ड. हम्म. माइनर कॉर्ड एंड एंड मेजर कॉर्ड. द मेजर कॉर्ड इज ये ऊपर वाला सेक्शन एओबी वाला पूरा, हाँ एंड दैट इज, नीचे वाला माइनर कॉर्ड. दिस इज सेगमेंट. सेगमेंट. ओके सॉरी. एंड दिस इज अ माइनर, दिस इज अ सेगमेंट और वो बड़ा सेगमेंट. ठीक है. ओके, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दैट इज मेजर सेगमेंट. ओके. हाँ. ठीक दिस है. इज कॉर्ड. ओके. फिर सेकंड इज इफ आई एक्सटेंड ना, जैसे हाँ this is a chord. हाँ. If you extend this, हम्म. it will become a second. ओके. ठीक है. So हम्म, ये tangent होता है. जी.
tangent में, हम्म if you think of any line which is drawn from the tangent, जैसे कि हम्म ये अगर tangent I made, हाँ, then this 90 is the डिग्री का होता है एंगल। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। जी। ऑल्सो फॉर द कॉर्ड से रेडियस भी 90 होता है, ओके। जी। और बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं दो कॉर्ड बनाऊंगा ना, तो वो दोनों में बाइसेक्ट करेगा। अच्छा, तो मतलब अगर हमने क्योंकि एक ही सर्कल में दो कॉर्ड्स बना दी और वो मैं तो इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकता हूँ, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। सब इनफिनाइट कॉर्ड हमारी रेडियस को बताएंगी थ्रू द मिड वो पॉइंट। यस, दे विल ऑल मेक 90 डिग्रीज विद द रेडियस, हाँ। but not just the radius actually. हाँ। Even if you just for example, if I make a small chord, हम्म so if I join the midpoint, मतलब सेंटर वाली लाइन जो जो उसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर बनाते हैं, ये रेडियस तो नहीं है ना। This is हम्म। a line drawn from center to the chord which is perpendicular हाँ। will bisect it, ओके। and radius also bisects it because radius will always be, ये बहुत। वाला रेडियस बाइसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो रेडियस टेंजेंट पे जा रहा है, मतलब मान लो ये रेडियस है और हम्म। ये बेसिकली इसको बाइसेक्ट करता जा रहा है, तो वो एक रेडियस ऐसा होगा जो बाइसेक्ट करेगा उसको। रेडियस तो ये भी है ना, हाँ, ये भी रेडियस है। ये है। Anything that is from the center to circumference will be हाँ। radius. ओके। Tangent, then हम्म if you, this is 90 degree, हम्म, so we call it semicircle. हाँ। So angle in a semicircle कहीं हम्म भी बना दो, हम्म it's 90. हम्म। And if this is 90, then what is this angle? If this is 90, this will be I don't know, sir. 180, Just yeah, it is right, twice 180. of 180, I mean twice of जो भी एंगल We call बनता it है। yeah. तो उसका एक वो है, we call it inscribed and central angle. So अच्छा। suppose take any arc AB, okay? This is an arc, okay? हाँ। And if you join the arc to the center, हाँ। let's call it some angle X. हम्म Same arc you join to the circumference anywhere, not at this point, but also you can join it here also. वो Anywhere you join it, दिस इज uh half. So let's call it half of 2x. This is x. half of ठीक है। And this is a useful property where questions are made. हम्म Inscribed angle, जी। inscribed and central angle. ठीक So है। anytime you see an arc, हम्म then how many times you make this kind of angle, all of them will be same. ठीक है। But it should be on the same side, not on the other side. विच इज ए बी। ए बी से ही बन रही है ना अक्सर। मतलब ये वाला यहाँ पे आर्क, ये वाला आर्क नहीं बना देना, ये काम हाँ। नहीं करेगा हाँ। उस साइड, ओके। बिकॉज ये 2x हमने यहाँ पे लिया ना, जी। तो वो उसी साइड में वो बनाना पड़ेगा सरकमफ्रेंस पे आर्क, सेम साइड। जी। एरिया वो जो 22/7 है, 22/7 r² हम्म बाई r², एरिया। हम्म, हाँ। तो इफ आई मेक अ सेक्टर, हम्म मान लो दिस इज वन, व्हाट इज अ गुड नंबर ऑफ मोर देन 100? सॉरी। टेल मी एनी नंबर मोर देन 100। मोर देन 100 कोई भी नंबर। लेट्स से 140। 101। ठीक है, 140। सो दिस विल बिकम अ सेक्टर, ठीक है। and using the angle you can find out the area. ओके। So whatever angle it is, theta by 360 into pi r². अच्छा, सेक्टर के बेस पे वी कैन कैलकुलेट द एरिया। It's मतलब वो ऐसा हो गया ना कि ये मान लो कि ये बड़ा होता जाएगा, हम्म अगर ये बड़ा होगा तो ये एंगल बड़ा होगा, जी सर। और ये मैक्सिमम कहाँ, it can reach to 1, right? This can become 1, this fraction. हाँ। So that's how it is derived. ठीक है।
area of a sector is also RL by 2, where L is the length of arc. Okay. But this formula is not needed actually. Length of arc भी उसी से आता है, मतलब 2 pi r, you know, no? Hmm. तो 2 pi में 2 pi is what? This is the angle at the center. Hmm. 360 है ना यहाँ पे. हाँ तो इसी को अगर हम रिड्यूस कर देंगे, जो भी रिड्यूस करेंगे थीटा बाय 2 पाई कर देना. सर समझ नहीं मतलब आया ये थीटा बाय 2 पाई आर कैसे हुआ। मतलब वी कॉल इट एल इज इक्वल टू आर इंटू बाई आर इंटू थीटा. सो लेट से सरकमफरेंस मुझे बनाना है, तो आर इंटू 2 पाई करते हैं ना. हाँ। तो अगर मैं छोटू आर्क पकड़ लूँ, जैसे ए बी पकड़ लिया मैंने, तो ए बी का तो एंगल कम है ना, यहाँ पे थीटा मान लो है. हम्म। तो ए बी इज एन आर्क. हाँ तो ए बी का जो लेंथ होगा वो इतना होगा. ए बी का लेंथ इज मतलब आर्क का लेंथ इज आर इंटू थीटा रेडियस इंटू करेक्ट. थीटा द एंगल हाँ, बिटवीन। यूजुअली दिस इज नॉट मच नीडेड, कैट वर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम अच्छा जस्ट टेलिंग यू कि इन दोनों में देयर इज सेम ओनली, द सेम आइडिया इज बोथ इन बोथ ऑफ देम. पर सर थीटा को हम 2 पाई लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो पूरा सरकमफरेंस होता है ना. इसी ए बी को पूरा सरकमफरेंस बना दोगे तो ये 2 पाई आर बन जाएगा. हाँ हाँ। तो दैट्स द आइडिया. अच्छा देन एल क्या है सर एल इज द एरिया ऑफ। एल इज द छोटू लेंथ, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर. ओके ओके यू आर सेइंग एल इज दैट सरकमफरेंस का छोटा पोर्शन विच इज ए बी मतलब यस. और उसका हम अगर हमें कैलकुलेट करना है एरिया आई यस. मीन नहीं तो नहीं, हम एरिया नहीं, अगर इसको बड़ा करोगे लेंथ पूरा को पता सरकमफरेंस. करना है तो हम उस सरकमफरेंस पे पहुंच जाएंगे सरकमफरेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। करेक्ट. ठीक है। अच्छा और वो लेंथ जो होगी हमारी जो छोटा पोर्शन है सरकमफरेंस का इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा द एंगल बिटवीन हम्म. द आर्क। हम्म. ठीक है। ओके। बट इन केस ऑफ सेमी सर्कल व्हाट इज सरकमफरेंस? सेमी सर्कल सरकमफरेंस क्या होगा अगर इसका रेडियस? हाफ हाफ नहीं, हाफ नहीं होगा. सरकमफरेंस तो हाफ हो जाएगा। मान लो इसका डायमीटर 10 है, तो हाँ रेडियस 5 हो गई। ठीक है, आप बताओ सरकमफरेंस बताओ. तो सरकमफरेंस तो आधी हो जाएगी ना। पाई आर पाई आर। ओके. टू. एनी अदर आंसर? सर यही आंसर है अब तो 2 पाई आर इज फुल सरकमफरेंस उसका आधा ले लेंगे तो पाई आर। पाई आर प्लस पाई आर प्लस द एरिया। सरकमफरेंस पूछ रहा हूँ. पाई आर प्लस सर पाई आर तो पता नहीं सर मुझे हाफ ही होगा पाई आर आई मीन 2 पाई आर इज द सरकमफरेंस उसका आधा सेमी सर्कल का आधा सरकमफरेंस इज पाई आर ओनली फॉर सरकमफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है? सरकमफरेंस का डेफिनेशन सर डेफिनेशन नहीं पता बट सर द बॉर्डर्स is the circumference like हाँ, सो out ये the होगा. portion। हाँ हाँ। ये होगा क्या, ये वाला पार्ट? कौन सा पार्ट नहीं ये नहीं होगा इसको। क्यों नहीं होगा? uh, हाँ होगा। तो आंसर क्या होगा? this is the radius AB is the diameter। हाँ, सो माय तो क्वेश्चन इज स्टिल एट द सरकमफरेंस ऑफ दिस फिगर, सेमी सर्कल. 2 r पाई आर प्लस 2 r। हम्म. हम्म. तो दिस इज द आंसर. अच्छा ठीक है। यू आर इग्नोरिंग दिस लाइन, नो? जी जी। ठीक है. हम्म तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेरीमीटर. हम्म 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 सो हम्म। if I make a square, then you will say perimeter is let's say 5 plus 5, right? For this part. Perimeter is yes। But you'll also count, if I ask you perimeter for this particular part, you'll count AC also, no? हाँ जी। हम्म। So ठीक है. That is a small silly mistake. So AC, whatever is in the boundary is in the perimeter. हाँ Fine. Then you have a couple of there is this idea called chord bisector theorem, which is what I just. सर कैन वी डू थ्योरम्स इन द नेक्स्ट क्लास। नहीं नहीं, ये थ्योरम उस नाम है, वो कुछ है नहीं, मतलब आई एम जस्ट क्लोजिंग इन 5 minutes एनीवे. ओके।
तो इट्स व्हाट वी जस्ट डिस्कस, उसका नाम बस ऐसा थ्योरम वोरम है, कुछ है नहीं उसमें। अच्छा ये क्या इंस्क्राइब्ड एंगल, सेंट्रल एंगल, इट्स वही जो हमने डिस्कस किया, वही चीज़ है। अच्छा अच्छा। अ, ये बस ये कह रहा है कि मान लो ये कॉर्ड है, ठीक है, हम्म हम्म और ये भी एक कॉर्ड है। हम्म अगर ये दोनों की वैल्यू 10 है, ये भी 10 है, हो हम्म सकता है ना ऐसा? करेक्ट। हम्म। तो ये दोनों एंगल सेम होगा, बस ये कह रहा है। और ये जो हमने दीज आर रेडियस राइट जो हमने। या हम्म करेक्ट, दिस आर रेडियस, यस। हम्म दिस यू कैन ऑल्सो प्रूव फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली। हम्म। तो These are इफ vertically opposite angles. द एंगल बाय द कॉर्क एट द सेंटर हाँ। विल बी सेम। अच्छा। बट सर ये मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वो वैसे इक्वल होंगे इन जनरल इन नेचर। नहीं, मतलब। ऑफ कोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी है, उससे भी यू कैन हाँ प्रूव इट। हाँ कॉन्ग्रुएंसी से भी यू कैन प्रूव इट। हाँ हाँ एंड प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमेशा ये ऐसा नहीं बनेगा, मतलब हाँ कॉर्ड तो मैं आई कैन मेक कॉर्ड एनीवेयर ना, हाँ। आई कैन मेक कॉर्ड कॉर्ड हमारी हियर, ऐसे बन सकती है लाइक आई कैन मेक कॉर्ड हियर आल्सो ना। वर्टिकली ना बन के वो हाँ, हॉरिजॉन्टल भी मतलब हॉरिजॉन्टल ना ऐसा भी बन बन के सकता है। वर्टिकल बन सकती है वर्टिकल भी बन सकती है हाँ, chord। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म। और So this is quad बस आई quad थिंक bisector इतना ही। theorem इसके अंदर सेंटर का जो भी एंगल बनेगा दो कोड्स का वो इक्वल होगा। हम्म, ठीक है। हाँ, वो मैं फिर से अगली क्लास में बताऊंगा वैसे। हम्म। तो कॉर्ड वही 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 परपेंडिकुलर वाली बात है, ठीक है, हम यहाँ पे हम्म। एंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके मेन सर। चीज वाज जस्ट दैट ये जो क्लास स्कूल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, हाँ वो रिवाइज हो दिस, गए एक तरीके हाँ, से। सो we will then hopefully continue inshallah from next वेडनेसडे। class onwards. Yeah. वेडनेसडे जी। Yeah. यस सर। Okay. यू सर Chalo. बाय गुड नाइट। Yeah. Bye. Goodbye.